નમસ્કાર ધોરણ 7ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમારું સંસ્કૃત વિષયનો સેમેસ્ટર બીજાનો એટલે કે સત્ર બીજાનો પાઠ નંબર બીજો છે વાર્તાલાપ એમનું સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન આ વિડીયો લેક્ચરમાં જોવાના છીએ। સાથે સાથે એક વાત કરી દઈએ કે જો તમારે આની પીડીએફ જોઈતી હોય તો તેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર તમને મળી જશે। તો જોઈએ પ્રશ્ન પહેલો, નીચે આપેલા ઉદાહરણ અનુસાર વાક્ય તમારે બનાવવાના છે, જેમાં પહેલું જોઈએ ચિત્રમ, તો ચિત્રમ સિદ્ધમ એવમ અસ્તિ। दालम तो दालम सिद्धम एवं अस्ति। व्यंजनम तो एम आवशे व्यंजनम सिद्धम एवं अस्ति। चायम तो चायम सिद्धम एवं अस्ति। ओदनम तो ओदनम सिद्धम एवं अस्ति। प्रश्न नंबर बीजो है, नीचे आपेला उदाहरण अनुसार वाक्य बनावाना है। किचित दुग्धम आवश्यकम, किचित जलम आवश्यकतम, किश्चित् यायशम आवश्यकम, किश्चित्तम व्यजनम आवश्यकम। नीचे आपेला उदाहरण अनुसार वाक्य बनावाना है। व्यजनम आवश्यकम वा, दुग्धम आवश्यकम वा, ओदनम आवश्यकम वा, दालम आवश्यकम वा, अवलेहम आवश्यकम वा। विचारीने संवाद तैयार करो। माता उपविष्टु जलम स्वीकरोतु, पुत्री धन्यवादः मातः। माता स्वीकरोतु, पुत्री धन्यवादः। इदानीं भोजनम आवश्यकम, माता किंचित् तक्रम आवश्यक वा, पुत्री ददातु, माता लवणम अपि आवश्यकम, पुत्री ददातु मातः। माता ओदनम स्वीकरोतु, पुत्री दालम अपि ददातु, माता अवलेहम अपि अस्ति आवश्यकम वा, पुत्री मास्तु तिक्तम अवलेहम न रुचिकरम, माता अन्य किमपि आवश्यकम, पुत्री इदानीं किमपि मास्तु भोजनं समाप्तं, भोजनं स्वादिष्टम अस्ति। प्रश्न नंबर 5 है, तमारा घरे बनती भोजननी वानगीओनी यादी बनावो। तो अहींया तमारे तमारी जाते बनाववानी छे गुजराती भाषामां। प्रश्न नंबर 6 है, काउंसमां आपेला शब्दों उपयोग करी उदाहरण मुजब वाक्य बनाववाना छे। सचकः मेघः, स्थालिका जलम, छत्रम भोजनम, पुष्पम उद्यानम, फलम वृक्षम, कक्षः अने छात्रा। तो मेघ अस्ति जलम नास्ति, स्थालिका अस्ति भोजनम नास्ति, पुष्पम अस्ति उद्यानम नास्ति, वृक्षम अस्ति फलम नास्ति, कक्षः अस्ति छात्रा नास्ति, छत्रम अस्ति जलम नास्ति। तो मित्रों आ हतुं नानकड़ुं एवुं स्वाध्याय सोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फरी मळीशुं आवा ज एक स्वाध्याय सोल्यूशन साथे। त्यां सुधी आवजो। जय हिंद, जय भारत।